ऐसे 710 comparative information corresponding figure or comparative financial statement. Comparative information corresponding figure and comparative financial statement deals with auditor's responsibility regarding comparative information in an audit of financial statement. There are two different broad approaches to auditor's responsibility in respect of corresponding comparative information, corresponding figure or comparative financial statement. करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होता है? तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स में होता है कि ऑडिटर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू करेंट पीरियड ओनली. ऑडिटर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू करेंट पीरियड ओनली. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू इच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड. ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू इच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड. ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट has been presented in all material respect in accordance with the requirement of comparative information in the applicable financial reporting framework and to report in accordance with the reporting responsibility. बोलता है audit procedure for comparative information. बोलता है परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर में क्या होता है? बोलता है इंश्योरिंग दैट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंटेन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. डिटरमाइनिंग वेदर द फाइनेंशियल बोलता है डिटरमाइनिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बोलता है ऑडिटर शुड इंश्योर दैट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री करना चाहिए. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री करना चाहिए किससे? एडी से करना चाहिए. एडी से एग्री करना चाहिए. अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड. बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी applied are consistent with those applied in current period. If there is any changes in accounting policy, if there is any changes in application of accounting policy, then they are properly presented and disclosed. Evaluating the impact on financial statement. If auditor become aware of the possible misstatement in the comparative information, he should perform the necessary audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence. If auditor has audited the prior period financial statement, then he should follow the relevant requirement of ऐसे 560. बोलता है सबसे पहले तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्री करना चाहिए. अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड. अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होना चाहिए जो करंट दोज अप्लाइड इन करंट पीरियड. इफ देयर इज एनी चेंजेस इन एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होना चाहिए. उसके बाद बोलता है परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. उसके बाद इफ ऑडिटर हैड ऑडिटेड द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ही शुड फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट ऐसे 560. बोलता है if auditor should also request written representation. He should obtain a specific written representation regarding the prior period item that is disclosed in the current period financial statement. रिपोर्टिंग कंसिडरेशन. बोलता है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू corresponding फिगर. बोलता है ऑडिटर्स ओपिनियन. बोलता है when corresponding figure are presented बोलता है ऑडिटर ओपिनियन शैल नॉट रेफर्स टू corresponding फिगर एक्सेप्ट दो केस में रेफर करना पड़ेगा. इफ ऑडिटर्स ओपिनियन प्रीवियस period contain other than qualified opinion. If auditor's report on previous period contain other than unqualified opinion. If the auditor opinion that he has sufficient evidence that material misstatement exists in financial statement of prior period which was not addressed earlier. Auditor's opinion shall not refer to corresponding figure. एक्सेप्ट दो केस में उसको रेफर करना पड़ेगा. यदि ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया है. वो बोलता है if the auditor's report of prior period if the auditor's report of previous period contain a qualified opinion. If auditor's opinion that there is sufficient evidence in this regard that material misstatement exists in the financial statement of prior period which was not addressed earlier. If prior period financial statement are
not audited. If the prior period financial statements are not audited, then he should obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balance does not contain material misstatement. If prior period financial statement audited नहीं हुआ है, जब prior period financial statement audited नहीं हुआ है, then auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence that prior period statement does not contain material misstatement. और बोलता है ऑडिटर्स बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेफरेंस टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जब रिपोर्टिंग करता है, तो बोलता है कि ऑडिटर्स ओपिनियन बोलता है व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड Auditor's opinion shall refers to each period for which financial statements are presented. Auditor's opinion refers to each period for which financial statements are presented. Auditor's opinion refers to each period for which auditor's opinion refers to each period for which financial statements are presented when reporting on current year audit. When reporting on current period audit, if auditor's opinion on such prior period financial statement differ from the opinion previously issued on such financial statement, auditor shall disclose substantive reason for different opinion इन अदर मैटर पैराग्राफ ऑफ हिज रिपोर्ट. बोलता है ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर्स टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड. और दूसरा बोलता है व्हेन रिपोर्टिंग ऑन करंट पीरियड ऑडिट इफ ऑडिटर इज ओपिनियन दैट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द ओपिनियन प्रीवियसली इशूड ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिफर करता है मतलब जो ओपिनियन पहले एक्सप्रेस किया था वो अभी उसका ओपिनियन से डिफर करता है, तो ऑडिटर से डिस्क्लोज करेगा सब्सटेंटिव रीजन फॉर डिफरेंट ओपिनियन इन द अदर मैटर पैराग्राफ ऑफ हिज रिपोर्ट. इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट मेटल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंटेड if auditor conclude that material misstatement is present in the previously audited figure of financial statement, he should report it to the appropriate level of the management. And request the predecessor auditor to be informed if the prior period if the prior year statement have been amended with the new report by the predecessor auditor, then auditor shall report only on current period. Reporting in case when audit report of earlier year is modified. बोलता है when auditor's report on prior period include a modified opinion and the matter which gives rise to modification of opinion is resolved, accounted and disclosed as per FRF. Auditor's opinion on current period need not refer to previous modifications. बोलता है if auditor's opinion prior period include a modified opinion, then matter which may give rise to modified opinion is resolved, accounted and disclosed as per FRF. Auditor बोलता है auditor's opinion on current period need not refer to previous modifications. If the matter unresolved, auditor shall modify the opinion on current period financial statement. Also बोलता है auditor if matter unresolved रह जाता है तो auditor shall modify opinion on the current period financial statement. Also in the basis for modification paragraph, auditor shall either refers to both current period figure and corresponding figure, current period figure और corresponding figure when the effect of the matter on current period figure are material. यदि current period में जो है तो उस मैटर का इम्पैक्ट जो मटेरियल होता है तो वो बोथ को रेफर करेगा, करंट पीरियड फिगर और करस्पॉन्डिंग फिगर को. ठीक है. इन अदर केस एक्सप्लेन दैट ओपिनियन हैज़ बीन मॉडिफाइड बिकॉज बोलता है एक्सप्लेन दैट ओपिनियन हैज़ बीन मॉडिफाइड बिकॉज of the effect of unresolved matter on the comparability of the current period figure and corresponding figure, on the comparability of current period figure or corresponding figure. In other case, explain that opinion has been modified because of the effect of unresolved matter on the comparability of current period figure or corresponding figure. उसका बोलता है corresponding figure क्या होता है? Corresponding figure where the amount and other disclosure where the comparative corresponding figure क्या होता है? तो comparative information where the amount and other disclosure for preceding period, whether the amount and disclosure for preceding period are included as a part of current period financial statement and are intended to be read in relation to current period figure. मतलब पार्ट के रूप में इंक्लूड किया जाता है और इंटेंडेड टू बी रीड इन रिलेशन टू करंट पीरियड फिगर. बोलता है दीज आर नॉट प्रेजेंटेड एज ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ
current period financial statement. Comparative information where the amount and other disclosure for prior period are included for comparison with financial statement of current period. बोलता है comparative financial statement क्या होता है? तो comparative information where the amount and other disclosure for prior period are included for comparison. यहाँ पे comparison के लिए कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड के लिए करते हैं. यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग फिगर में क्या होता है? वेयर द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर पर preceding period are included as a part of current period financial statement are intended to be read in relation with current period figure. And बोलता these are presented as a complete set of बोलता these are not presented as a complete set of financial statement but as a integral part of current period financial statement.